अभी आप दो डिफरेंट वॉर्स हुए, 1971 में वार हुआ, 1962 में जो वार हुआ, 1999 में जो वार हुआ. योर एनिमी इज सिटिंग एट द टॉप मोस्ट लेवल एट द माउंटेनियर एरियाज. So it is very much important कि your aviation sector should be very much stronger. Go about the different development in the development stages of the engines. So you will find out that there is a number of, I already told you, we are in India, we are lagging in the material, finding the material resources. Whatever material are used in the engines. Engine has to, I tell you, the temperature of turbine is around 1550 degree Kelvin. That is, matlab, you can say it is very high. 1515 Kelvin is very high. And rotation of a single engine, I tell you, it is 21,200 RPM something, 10,200 RPM. At that speed, when 1 minutes, it is revolving 10,200 in 1 minute. So that is the speed of the engine. You can think about it, it is so sophisticated. तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सबका दिन अच्छा गया होगा। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से चाहूंगा कि वो हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। Hi Mohit, this is Ashish. I am an air veteran and I have been serving in Indian Air Force since last 20 years. And now I am working in an aviation company in a private sector. And since last 2 years, I am working in the same company, which is situated in Noida. And it is fully working for the design and development programs for various Air Force, Army and Indian Navy. So this is only the... Okay. तो आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो कैन यू शेयर अ पर्टिकुलर चैलेंजिंग प्रॉब्लम जो आपने एनकाउंटर्ड किया अपने पूरे करियर में और उसका सोल्यूशन जो आपने अप्लाई किया उसको रिजॉल्व करने के लिए? ऐसा है, ये जो एविएशन सेक्टर है ना, ये एक अपने में एक ब्रॉड स्कोप है और इसका टाइम टू टाइम हमेशा सिनेरियोज है, चेंज होते रहते हैं। खासकर जब आप एक डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हो और भी इंडियन एयरफोर्स जो कि आपको वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स में आती है, तो आपके पास चैलेंजेस तो हर टाइम रहेंगे। हर टाइम आपके पास नया एक प्रॉब्लम इनकाउंटर होगा, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर आप उसका सोल्यूशन दोगे। सो ये एक मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप एज ए टेक्निकल पर्सन, अगर आप इंडियन एयरफोर्स में अगर आप काम करके आ रहे हो, तो हर टाइम आपके पास एक चैलेंजेस रहेगी। अब इस टाइप का चैलेंजेस तो लाइफ में हर टाइम आया हमारे पास। अब सपोज दैट हम लोग ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं, जब अभी आपके पास एक कुछ प्लान आता है कि आज आपको कहीं पे मतलब कुछ अगर फाइट हो रहा है या कुछ समथिंग, कुछ ऐसा प्लान है, उस प्लान के अकॉर्डिंगली आपको रिएक्ट करना है। तो टाइमली रिएक्शन सबसे फर्स्ट रूल है इन एविएशन सेक्टर में। अगर आप टाइमली रिएक्शन नहीं कर पाए, मतलब 0% एरर जो बोलते हैं ना, वो भी परमिटेड नहीं है। अगर एविएशन सेक्टर में जाएं तो वो भी परमिटेड नहीं है। तो इसलिए इसका जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है वो हर टाइम लाइफ में आता रहा। अब छोटे छोटे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकल वाइज अगर हम इनकाउंटर करने जाएं, जैसे एक टेक्निकल प्रॉब्लम में हमारे पास आया था जब मैं एक टेस्ट्रिग होता है जहां पे हम कंपोनेंट्स को टेस्ट करते हैं। छोटे जो आपके एविएशन के कंपोनेंट्स होते हैं उनको टेस्टिंग के लिए जाते हैं। तो ये जो हमें सप्लाइड था फ्रांस के द्वारा, एक पूरा सेटअप बनाया हुआ था, उसमें हम लोग टेस्टिंग करते थे। तो एक इसमें एक हीट एक्सचेंजर था जो कि जिसका लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स से ये हो रहा था कि हीट एक्सचेंजर को अपने आप बर्स्ट हो जाता था। जैसे अभी आपको जैसे एक टेम्परेचर आप शूटअप करते थे, टेम्परेचर शूटअप करने के बाद वो एक बर्स्ट हो जा रहा है। तो इसका एनकाउंटर जो प्रॉब्लम था वो हमें पता नहीं चल पा रहा था कि क्यों हो रहा है ऐसा। हमने टाइम टू टाइम बहुत बार इसका एनकाउंटर करने की कोशिश किया। हमने इसको डसॉल्ट एविएशन को भी लिखा कि भाई ये प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करो। तो हमें यही पता चला बाद में, फिर हमने इसका एनालिसिस के लिए एक टीम बैठाई। टीम के साथ हमने एनालिसिस करने में जब पता चला कि जो हीट एक्सचेंजर है जस्ट इट इज नियर टू द अपना एक ड्राइव, एक मोटर है, उस मोटर के पास है। तो एज सून एज व्हेन यू स्विच ऑन द मोटर, तो एट दैट टाइम ए सडन जर्क कम टू द हीट एक्सचेंजर एंड विच इज कॉजिंग द रप्चर ऑफ दैट हीट एक्सचेंजर। तो उसके बाद हमने उसको मॉडिफाई किया, उसका थोड़ा सा डिस्टेंस दूर किया और एक नया सोल्यूशन देके इसको इनकाउंटर किया। तो सेम टाइम जैसे मतलब आप जब भी टेक्निकल में होते हो ना, तो हर टाइम आपके दिमाग में ना कुछ नया चलना चाहिए जिसके आप इनकाउंटर कर पाओ चीजों को। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जो मैंने मतलब फेस किया था। बाकी ऐसे तो हर दिन हमारे लिए एक नया चैलेंजेस ही था। जो एयरफोर्स में अगर ऑपरेशंस में जब भी जा रहे हो, कोई भी, ऐसे तो एयरफोर्स का मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नॉर्मल भी अगर आप ऑपरेशंस में जब काम करते हो तो आप देखते ही हो कि कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये भी एक मतलब चैलेंजिंग थिंग्स है लाइफ के लिए।
तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी कि मतलब आपको क्या चीज ने इंस्पायर किया टू बिकम एन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन इन योर वर्क, आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो टेक्निकली क्या है, चीजें आपके पास बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हो, जैसे बुक्स पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यार ये कुछ एयर का हमें पढ़ रहे हैं, मान ली सपोज, या फिर आप एक वाटर पढ़ रहे हो तो वाटर कैसे आया, कहाँ से हुआ, ये एक दिमाग में ना बच्चों का मतलब एक फैक्टर होता है जो हमेशा चलता रहता है कि ये कैसे हुआ, ये कब होगा। तो वो आपको हमेशा ना एक इंस्पिरेशनल देते रहती है कि आप कुछ अच्छा करो कि जो थोड़ा लीक से हटके हो। जब भी मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैं पहले +2 किया एमपीसीएम से, और उस प्लान की मैं कभी मतलब कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाऊंगा इस टाइप का, मगर इन बिटवीन आई गॉट अ चांस टू कम टू एयरफोर्स। और टेक्निकली तो मुझे था ही कि हाँ कुछ करना है, टेक्निकल चीज में जाना है। और एयरफोर्स में आपको मतलब एक प्रोविजन मिल रही थी कि आप टेक्निकली जाकर ना चीजों को सीखो समझो। एविएशन एक सबको एयरक्राफ्ट देखने में लगता है कि हाँ काश कि मैं भी यहाँ बैठ पाता या कुछ कर पाता उसको। तो वो एक इंस्पिरेशन था सर, और इसके देखने से हमें धीरे धीरे आइडिया लगा और इसको हम अपने मतलब इंस्पिरेशन मान के फिर मैंने एयरफोर्स को ज्वाइन किया, और फिर तो बाकी का सफर ऐसे ही चल रहा था। तो थोड़ा सा नजरिए के ऊपर आते हैं। आपका नजरिया कैसे बदला? हाउ हैज योर परसेप्शन ऑफ दिस प्रोफेशन चेंज्ड ओवर द कोर्स ऑफ योर करियर? जब आप इनिशियली एयरफोर्स मैंने ज्वाइन किया था, दैट टाइम मतलब आई वाज अ वेरी न्यू, मतलब आप न्यू बॉर्न टाइप समझो। जब आप 22-23 ईयर्स के होते हो उस टाइम में एक कैरियर का बहुत मतलब आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, सपोज एक कॉलेज स्टूडेंट होके आप उस कैरियर में आप आ जाते हो कि एक कैरियर आपके पास बन गया है, आपको एक मिल गया है, प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पे आप कुछ कर सकते हो। तो जब मैंने ज्वाइन किया एयरफोर्स, तो इसमें हमें सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, 2 साल की आपकी रिगरस ट्रेनिंग होती है टेक्निकल के बारे में। जैसे मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड है तो मैकेनिकल का मुझे एक डिप्लोमा टाइप का सारा कुछ बताया गया जैसे डिप्लोमा में होता है। और उसके बाद फिर जो हमारा फील्ड है, जैसे जिस एयरक्राफ्ट में मैं काम करना चाहता हूँ, जो मतलब मुझे अलॉट हुआ, उस एयरक्राफ्ट के बारे में सारा जो डिटेल्स होता है वो समझाया जाता है, ताकि एक बंदा, वही जो मैंने आपको शुरू में बताया कि 0% एरर भी परमिटेड नहीं है। खासकर अगर आप डिफेंस में काम कर रहे हो तो सोचो एक पायलट का लाइफ आपके हाथ में है, से एवरीथिंग, मतलब आपका एक जहाज जो कितना करोड़ों रुपए का है, एक मतलब इंडियन गवर्नमेंट का एक मतलब जो चीजें हैं, एक गरीब आदमी का भी उसमें पैसा लगा है, एक अभी इनकम टैक्स जो बढ़ते हैं पैसे, उस पैसे से वो देश का चीजें चल रही है, उसको आपको हैंडल करना है। तो दैट मीन्स की एक्यूरेसी शुड बी फुल प्रूफ। तो सेम इसी के हिसाब से हम लोगों ने ट्रेनिंग लेने के बाद हमें इसका धीरे धीरे मतलब हमारा जो मैच्योरिटी लेवल था वो बढ़ता गया, और आपको समझ आता गया कि हाँ अभी पहले शुरू में हमें एयरफोर्स ने भी ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि ऐसा नहीं कि आप पहले जाते ही आपको एयरक्राफ्ट मिल जाएगा, आप एयरक्राफ्ट का सर्विसिंग करने लगोगे, ऐसा नहीं है। आपको शुरू में पहले सब सिखाया जाएगा, फिर आपके ऊपर सुपरवाइजर्स होंगे, सुपरवाइजर आपको ट्रेन करेंगे, फिर उसके बाद आप खुद सुपरवाइजर बनोगे एक दिन। फिर आपको धीरे धीरे आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, आप 4th लाइन सर्विसिंग तक जाओगे। जैसे मैं ओवरऑल में भी ट्रेन था, इंजन मेरा स्पेसिफिक ट्रेड था, वो इंजन था। मतलब आप इंजन के ऊपर मैं फुली मतलब कह सकता हूँ कि मैं कन्वर्सेंट था कि मैं इंजन के ऊपर कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो चीजें स्लो टाइम टू टाइम मतलब धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस पे, आपका जो फ्यूचर जो पास्ट में आपने सीखा है उससे आप सीखते हो, करते हो। तो यही सब टोटल इसका ये है। ओके, तो अगर मैं एडवांसमेंट्स की बात करूं इन मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी की, तो क्या फ्यूचरिस्टिक चेंज आपको नजर आता है एयरक्राफ्ट डिजाइन में? और अगर मैं बात करूं इंटरेस्टिंग कुछ चैलेंजिंग उसके रिगार्डिंग, आपको लगता है कि इन द फ्यूचर कोई चैलेंज भी आ सकता है इस डिजाइन के? अगर बात करें किसी भी डिजाइन की, जो भी आपको लगता है। अभी जो एडवांसमेंट हो रहा है एयरक्राफ्ट पे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मटेरियल चूजिंग। जो हम मटेरियल अभी जैसे हम अभी अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। अभी हमने 1960s में हमने एयरक्राफ्ट लिया था फर्स्ट टाइम, उसके बाद से अभी तक हम लोग उस लेवल तक नहीं आ पाए हैं कि हम अपना एयरक्राफ्ट जो है मतलब एक मास प्रोडक्शन कर पाए या समथिंग। मैंने हमारे पास वेराइटीज ऑफ एयरक्राफ्ट हो, अभी तक हमारे पास तेजस एक एयरक्राफ्ट है जो हमने मतलब अगर बोले तो इनबिल्ट इंडिया में बना है। बाकी अभी फिर भी अभी बहुत मतलब हम पीछे हैं। अगर हम टाइमली अगर इसको हम स्टार्ट करते तो शायद हम आज बहुत सारे एयरक्राफ्ट खरीद बना रहे होते। अभी जैसे रफाल हमने खरीदा जस्ट अभी बाहर से, तो ये सब चीजें अभी मतलब अगर होता तो इंडिया में हम खुद बना सकते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मटेरियल का। तो कंपोजिट मटेरियल जो है, अभी आप देखोगे कंपोजिट मटेरियल का ज्यादा यूज हो रहा है। अब कंपोजिट मटेरियल आप किस लेवल तक हम समझ रहे हैं उसको, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है। अगर आप
मटेरियल तो सिलेक्शन आप कुछ भी कर लोगे, लेकिन उस मटेरियल के ऊपर हम कितना अपना ये लगा रहे हैं, R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं, वो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर है आपका एवियोनिक सिस्टम। हम डिफरेंट एवियोनिक सिस्टम हम अभी प्रोक्योर कर रहे हैं या फिर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब एवियोनिक्स ऐसा चीज है जिसमें पूरा एयरक्राफ्ट का जितना भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो रिजॉल्व करता है। एविएशन में आप जाओगे तो उसका पार्ट मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम एवियोनिक सिस्टम को भी हम समझें कि हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है, जो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट वर्जन है जैसे ऑटोनोमस सिस्टम। आजकल हम ऑटोनोमस सिस्टम पे बिलीव कर रहे हैं। एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। तो ये सब चीजें जो है अभी आपका न्यू फ्यूचरिस्टिक जो प्लान है उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसका हर का हमें एक स्टैंड बाय सिस्टम भी चाहिए। अगर आप एआई से कुछ सिस्टम बनाए हो, उसका भी एक स्टैंड बाय सिस्टम होना चाहिए। नहीं होगा तो सब, क्योंकि एयरक्राफ्ट में आपको पता है, अगर जब एयरक्राफ्ट एयर में होता है तो इट इज नथिंग, मतलब आप कुछ भी इसका जो निचोड़ है ना, नीचे से नहीं कर सकते हो, ग्राउंड से आप कुछ भी नहीं सपोर्ट दे सकते हो। तो एक बंदा जो अंदर बैठा है, मे बी ही मतलब कुछ टाइम में वहां पे कुछ भी हो सकता है। जो पायलट बैठा है उसका दिमाग अभी चल रहा है, थोड़ा देर के बाद उसका दिमाग हो सकता है मे बी ही गेट सैचुरेशन, समथिंग, सम इश्यूज कम। सो इसलिए हमेशा एक स्टैंड बाय मोड होता है एयरक्राफ्ट में। तो ये सब चीजें चैलेंजेस है जो कि अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। और टाइम टू टाइम आई थिंक कि इन फ्यूचर वी विल, इन इंडिया ऑल्सो वी विल एबल टू गिव द बेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। सो अभी तो इतना ही है इसका। ओके, तो अगर मैं बात करूं एज अ टेक्नीशियन, तो हाउ डू यू बैलेंस द नीड फॉर एक्यूरेसी एंड स्पीड व्हेन कंडक्टिंग मेंटेनेंस टू एंश्योर द सेफ्टी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी? First of all, we should always follow the procedures. There are some SOPs, standard guideline procedures are given by the OEM. Suppose we have taken the aircraft from some country like from Russia or from France. So they used to give us some manuals to understand the things. If some problem has arisen, you should go with that manual and you should work accordingly. So this is very much important. We should follow every procedure from starting to the end. Similarly, we should prioritize our safety procedures. If you are prioritizing it, if you are keeping it at the height, topmost level, then there is no chances that you will get something, some problem or some damages will be there. Then there should be a routine training for every technicians or either supervisors, including pilots. So this will enhance your capability. It is very much important. Similarly, we should work on effective time management, like whatever the time management, suppose a schedule maintenance activities. So we should understand that we should be restricted on various schedule maintenance practices. Similarly, we should use the technology, new technology, whatever the technology is coming, we can use it, and we can try to get things done with this technology. Similarly, we should have a strong documentation procedure. Whatever the work we have done, it should be documented. This documentation is very much important when, suppose you are working now. Tomorrow some other person is coming and he has started working on that aircraft. So if you have not documented it properly, how he will come to know what type of servicing you have carried out? So this is very much important. So then we can keep on continuous improvement of the things, whatever the thing that is going on. You should be keep on continuously improvement of that things. Similarly, for emergency preparedness, suppose you should have the capability, you should handle some emergencies problems that is arising into your stream. So these all things you can use it to follow the good flight services. Okay, थोड़ी सी ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं. इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की बात करूँ अगर मैं, तो क्या क्या मेजर्स इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक लिए हैं टू इंश्योर इट्स पायलट्स एंड मेंटेनेंस क्रूज आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न एयरक्राफ्ट? Suppose whenever we are purchasing, suppose Indian Air Force is purchasing an aircraft, so the OEM, it is fully conversant. They are, first of all, a team used to set up. They used to set up a team who carry out a tremendous study on what type of aircraft we have chosen, how they are going to be rely on our maintenance principles, philosophies. So by this, in the initial stage only, the Indian Air Force starts populating all these things. After induction of the aircraft, then the proper training, either it is in the foreign OEM or it is in India, everywhere that proper training procedure is carried out.
including each technician as well as each pilots are trained on particular aircraft. So that they should be fully conversant on how to handle the aircraft, how to handle the maintenance practices. So these all things are kept in mind since in induction of the aircraft. Now, for futuristic things, time to time they used to keep us, give us a training so that we should keep updated on whatever the new things are coming for or something like modification has come. See, this is a ongoing process. This is not a single day ki you have purchased an aircraft and it will keep on flying. Every time your scenario will be changing. Sometime you will come to know that this type of missiles is very much important for India. So you will go and purchase that missile. So now that missile, if you are fitting in the aircraft, so that person should be a conversant of that missiles also. So this training procedure is keep on continuing. It is a continuous process. So in Indian Air Force, this process keep on going. Every time you will given trainings on different type of aircraft, different type of the maintenance principles. So this is a continuous process. Okay, can you share a significant moment जहाँ पे एयरक्राफ्ट का बहुत इम्पैक्ट रहा हो उसकी डेवलपमेंट पे? जैसे एयरक्राफ्ट का जो इम्पोर्टेंट रोल है, अभी आप जो डिफरेंट वार्स हुए, 1971 में वार हुआ, 1962 में जो वार हुआ, 1999 में जो वार हुआ, इसमें आपने देखा कि जो एयरक्राफ्ट का जो रोल था एक काफी, क्योंकि अगर आप मिलिट्री बेस आप जाओगे, जब मिलिट्री में आपका 3 पार्ट है, आर्मी, नेवी है और एयरफोर्स है. आर्मी का तो एक आपको पता है कि ये जो एक पूरा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, जिसको बहुत लोगों ने मिलके उसको हैंडल कर रहे हैं, चल रहा है. लेकिन हमारा जो इंडिया है उसका जो रीजन है, कुछ पहाड़ी इलाका है, माउंटेनियस है, कुछ डीप सी में है, इस टाइप का एरियाज है. उस एरिया को कवर करने के लिए एयरफोर्स एक मेजर रोल प्ले करती है, और उस रोल के लिए आपको एविएशन में एयरक्राफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अभी आप देखो एयरक्राफ्ट सिलेक्शन, जैसे अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि अभी पहले हमने रशियन एयरक्राफ्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे. अभी लास्ट 20 ईयर्स से हम यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं. पहले मिग का आप देखे थे, मिग का बोलबाला था, मिग का सीरीज हम ले रहे थे, सिर्फ कोई लिया हमने. अभी जो है हमने चेंज करके मिराज में आए, मिराज से रफाल में आए. दिस ऑल आर यूरोपियन कंट्रीज एयरक्राफ्ट. सो व्हाई वी हैव शिफ्टेड दिस? बिकॉज ऑफ आवर एनमी हमारा कौन है? जो कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान, चाइना, दे आर सिटिंग एट द माउंटेनियर एरिया वेयर यू आपका एयरक्राफ्ट का जो मैन्यूवरिंग एरिया होता है ना, मैन्यूवरिंग जो हम करते हैं एयरक्राफ्ट को, तो दैट रिक्वायर्स सम स्पीड, समथिंग, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोज, जो सिनेरियोज होता है उसके लिए चाहिए. तो वो सिनेरियोज छोटे एयरक्राफ्ट ज्यादा प्रिफरेबली काम कर सकते हैं. इसीलिए हमने ऐसे एयरक्राफ्ट को सिलेक्शन किया. जैसे अभी अपने कंट्रोवर्सी आया था रफाल, जब हमने इंडक्शन कर रहे थे, कितने सारे कंट्रोवर्सीज आई थी कि दे हैव चीटेड समथिंग लाइक दैट. बट व्हेन यू स्टडी abroad, then you come to know कि these aircraft are the most suitable aircraft that we have chosen, because our enemy is China, Pakistan. They are sitting on the mountaineer area. अब 1971 वॉर में भी आपने देखा, 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी, इसमें सेम जब हमारी आर्मी आगे बढ़ रही थी, आगे जब माउंटेन एरिया में चढ़ाई कर रहे थे, उनके लिए दिक्कत था. माउंटेन एरिया में आप चढ़ाई नहीं कर सकते ना, दुश्मन आपके ऊपर बैठा है, और वो अब जब चढ़ाई करने जाओगे, दे विल शूट यू. The simple thing is that you can use the aircraft and you can bombard with aircraft, and you can get the right thing at your right place. So that is why the role of aircraft is very much important during this type of operations. Okay, तो डिफेंस स्ट्रेटेजी की बात करते हैं इंडिया की, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे. तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज डिफेंस स्ट्रेटेजी, तो हाउ डज द इंडियन एयरफोर्स यूटिलाइज इट्स एयरक्राफ्ट फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस, both in terms of national defense and regional stability? जैसा कि अभी अगर इंडियन अगर डिफेंस फोर्सेस में इन जो एयरफोर्स होती है, वो एक ऐसा फोर्स है जिसके ऊपर डिपेंडेंसी पूरी एक कंट्री की होती है. क्योंकि अगर वो स्ट्रांग है, अगर एयरफोर्स किसी देश की स्ट्रांग है, तो इट इज वेरी इजी कि दैट कंट्री कैन से कि आई एम सस्टेनेबल. That's why I told you in the earlier stage also कि we were the 4th
Air Force matlab in the world, which is the biggest Air Force. So the things are like that ki, same, if you are having a capability to fight, you should have a strong army. You should have a strong defense system. So that defense system is very much important when it comes to Air Force. Because by aircraft, you can fire a missile also, you can fire a bomb also, everything can be possible. And when your enemy is sitting at the topmost level, at the mountaineer areas, so it is very much important that your aviation sector should be very much stronger. So this is if you are concerned with the strategic system of India, it is very much important. The Indian Air Force should be giving a backup every time to the defense forces. You have seen also the Indian defense forces are so highly qualified that in the world everywhere, when you see in the world, we are having a number of exercises going on. Every country are inviting us to have an exercise with us because our strategic mind is so advanced. They want to learn from us whether they can survive with us or not, something like that. They also thinks if you are going to fight with a country, suppose it is like a game. You can say it is like a game. Suppose we are playing a cricket or we are playing an Olympic game, something. So you need another country also to understand their strategy, to understand how they are playing and whether I am playing at a right way or not. How you will learn? You will learn from different country. So that is all the strategic planning that every Air Force, not only India, but every Air Force all over the world, they are following this. And they used to give us, they used to share also the things with each other so that they can keep on continuous improvement in their processes. ओके तो अगर मैं बात करूं इंजन की, एरो इंजन्स की, तो दीज थिंग्स आर द वेरी क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ एयरक्राफ्ट. तो हाउ डू यू अप्रोच द मेंटेनेंस ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, और क्या रोल होता है जो टेक्नोलॉजीज का इन द वर्क? व्हाट रोल डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज play in your work? For aero engines, I will tell you the aero engines is the heart of the aircraft. It is called the heart of the aircraft. Without aero engine, you can understand that no aircraft can fly. So what in our in fighter aircrafts, we used to have jet engines. So there are different. You might have heard about the type of engines, different type piston engines. There are something different like turbo prop engines. So it is turbojet engines. So in this engine, I have told you that it is the heart of the engine, so a heart of the aircraft. So it is having a number of maintenance practices. That is to keep it reliable, to keep it sustainable throughout the service of the aircraft. So we used to have a preventive maintenance schedules in every flight. After every flight, before every flight, we to follow some SOPs, standard operating procedures, to check the aircraft, whether it is check the engines, whether it is serving, it is working properly or not. Then only we clear the aircraft to fly. So these all the preventive maintenance practices are being followed throughout Air Force. Similarly, suppose we have divided the servicing into different lines, like first line servicing, second line servicing, third line servicing, fourth line servicing. So these all servicings we have divided our procedures into this. Fourth line servicing is in which we are going to overhaul the engine. The whole engine is overhauled after a certain period of time to check whether it is a rotating part. Every time engine is rotating, there are number of bearings are there which are keep on rotating. So it is very much important that we used to check it timely, time to time. So this is all concerns. So we always keep on tracking every maintenance schedule of the engines. Similarly, if you go about the different development stages of the engines, so you will find out that there is a number of, I already told you, we are in India, we are lagging in the material, finding the material resources. What type of material are used in the engines? Engine has to, I tell you, the temperature of turbine is around 1550 degree Kelvin. That is, you can say it is very high. 1500 and 15
Kelvin is very high. And rotation of a single engine, I tell you, it is 21,200 RPM, something, 10,200 RPM. At that speed, when 1 minutes, it is revolving 10,200 in 1 minute. So that is the speed of the engine. You can think about it, it is so sophisticated. So making everything is possible. You should have a deep study. You should have to go on different type of maintenance activities. So these all to be maintained. And I've already described you that documentation part should be very much stronger. So you should understand the last service, whatever last servicing that we have carried out, that is to be reflected in the documents. So that the person who is carrying out the next servicing, he should be aware about that. So we are having the plant servicing also, like something 50-hour servicing, 100-hour servicing, so that we should that engine should be keep on serviceable all the times. Okay. अगर मैं बात करूं in terms of engine design और performance की, तो क्या क्या ट्रेंड्स आपको नजर आ रहे हैं इन द फ्यूचर और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपकी मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज पे? अभी जो इंजन का मेंटेनेंस है, अभी जो इंजन का डिफरेंट टाइप ऑफ इंजन अभी जो बन रहे हैं, इसमें मोस्टली कंसर्न अभी है फ्यूल का. अभी जैसे अभी बात चल रही है कि हम लोग जो फ्यूल्स अभी इसमें जेट A1 फ्यूल होता है, जो आप समझो कैरोसिन ऑयल जो हम लोग यूज करते थे ना पहले, दैट ऑयल अभी इसका जो वर्जन होता है हमारे एयरफोर्स में, जैसे हम लोग यूज करते हैं जेट A1 बोलते हैं, उसका एक वर्जन है. तो दैट वी आर यूजिंग इट. So that is highly polluted. if we concerned about it, then pollution affection बहुत है इसके अंदर. Plus it is very costly also. Like it is something, I think 70 rupees per liter, 70 rupees per liter it is costing. So it is a very huge amount that we are wasting on this for the flying of each aircraft. So it is very much concerned that we should develop such type of engine which are working with very less amount of fuel, or which are working with the biogas type of fuels. So these all type of designs already it is going on development. It is in the development stages, and in future time will come when we will be using these biogas and biofuels for aviation purpose. So for this, the design factor is very much important. Now suppose the design of the turbine, design of the compressor, these all make the aircraft for fully conversion to fly on the air. Suppose if you are not having the good compressor, the compression ratio will be increased, and it will give a very bad. Suppose speed. Now for the fighter aircraft, the speed matters. If it is like for I tell you Mirage, it is having 2.2 Mach speed, so it is a very high speed. So that speed matters only because of design. If your design is not capable of this meeting the speed, meeting the accuracy, then there will be no use of the aircraft, because for operations you have to go for the fighting. It is not like that you have to just go for flying and you have to come back. It is not like that. You have to go for the fighting for the fighting forces. So for that, it is very much important your design, your accuracy, everything should matters. So in engine design, these all things are going on, and it is in the process. So let's see. In future, maybe in India also, we will be able to produce new engines. We are hoping that. तो लीडरशिप क्वालिटीज की बात करें तो क्या क्या लीडरशिप लेसन्स आपको सीखने को मिले एविएशन सेक्टर से, और आप उसको किस तरीके से अप्लाई करते हो? लाइफ में लीडरशिप इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आपके पास लीडरशिप है तो इट विल हेल्प यू टू सर्वाइव इन एवरी एन एडवर्स कंडीशन ऑफ द सिचुएशंस. If I was working in the Indian Force, so that itself teaches you a leadership, because when you are working in the operations role or something defense forces, or so there every time, in every fraction of second, you will get a new challenges, and that challenges, if you are not a good leader, you will not able to survive in that atmosphere, in that situations. So leadership is very much important for. I will tell you, this is for youngsters, for every for housewife, anybody in the in universe. If you are having a good leadership quality, you will able to survive in a very well defined manner. I will tell you that leadership, like so we were working for the operations role, so we were allotted some
10 aircrafts. Today we are going to fly for the 10 aircraft. Now, as a leader, I should decide which aircraft I should prefer first, which aircraft I should do the letter servicing. Something that you have to plan. So that, and you have to, suppose you are a leader, you are having 10 subordinates working with you. And if you are a good leader, you will able to have a very good relationship with that 10 subordinates. It is very much important. For any operation role, for any, suppose if you are working in any other sector, any sector. So leadership role is very much important. So in an aviation also we have, and I will tell you, as a defense forces, leadership must be an inborn quality in every individual, in every soldiers. You might be seeing in the movies also, and something that is inspired from the soldier's life only. So. Okay. तो बॉलीवुड में अब तक जितनी भी मूवीज बनी है सोल्जर्स के ऊपर या एयरफोर्स के ऊपर, तो आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है? अभी नाम तो मुझे याद नहीं है. अभी लास्ट टाइम जो अभी आया था इस पे उड़ी अटैक जो था, दैट वाज वन ऑफ द ऑसम मूवी एंड आई हैव सीन दैट. सो इट इज कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट सोल्जर लाइफ. Whatever the soldier life is facing, that is covered in that movie. So I think it is one of the best movie, and every individual should learn from that movie how a soldier behaves, how a soldier understand the things, react in the situation, adverse conditions. So that's why my government has recently launched that Agniveer. Because in Israel, in other countries also, you have seen that in initial stage, people used to go to the defense forces. They used to learn the things from there, and that they used to follow it throughout their life. So it is very much important. Every individual should learn something from, because this is actually all whatever the quality is there. That quality cannot come from inborn. You have to learn something. Something we can say that there are some qualities that used to come inborn, and that's some qualities that we used to learn from our situations, learn from our scenarios which we are facing. So I think every individual should learn something from the defense forces, something from the soldiers. तो मैंने पिछले में एक पॉडकास्ट किया था, तो उनको जो हमारे गेस्ट थे वो स्क्वाड्रन लीडर थे इंडियन एयरफोर्स में. तो वो बता रहे थे कि जो मूवीज आप देखते हो, जो आप मूवीज देखते हो, उरी वगैरह जो भी, तो वो हमें पहले से पता होता है, और जो फिल्म के मेन हीरो होते हैं हम उनको जानते होते हैं, वो हमारे जान पहचान के लोग होते हैं. तो आप मिले हो ऐसे किसी हीरो से? ऐसा तो मौका मुझे नहीं मिला. जब एक बार जो शूट हो रहा था ना, तो वही आपके बेसिस पे होता है कि कभी आपके बेस पे कोई शूट हो रहा है, सपोज जिस बेस पे मैं हूँ वहां पे कोई शूट हो रहा है, यू कैन मीट देम. बट अभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कि उस बेस पे कोई शूट ऐसा इस टाइप का हुआ, तो इसीलिए मैं मिल तो नहीं पाया. बट दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब. अगर देखो, अभी मेरा यही कहना है कि जो भी बंदे इसको लेके आते हैं बाहर, जो एक हीरो होता है या एक डायरेक्टर होता है, तो चीजों को समझ, एक सोल्जर का जो भावनाएं हैं उनको बाहर लेके आते हैं, मूवीज में आते हैं. सपोज एक न्यूज चैनल में मैं देखता हूँ जब रक्षाबंधन होता है या समथिंग दिवाली होती है, तो एक जो जो इंटरनल जो फीलिंग्स है ना, जो एक सैनिक का जो है, इसी से एक जो सोल्जर होता है ना बहुत खुश हो जाता है इसको देख के. तो वो चीजें जो है ना, वो फैक्टर्स दे आर मोटिवेटिंग फैक्टर्स. एक एक जो सोल्जर था, मैं भी एक सोल्जर में जब मैं उस यूनिफॉर्म में होता था, तो मेरे लिए वो मोटिवेटिंग फैक्टर होता था. मेरे आंखों से आंसू आ जाते थे कि ये इस चीजों को देख के ना मुझे लगता है कि मैं जी रहा हूँ, उस पल को जी रहा हूँ. तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. अच्छा चीज है, और इट इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ द कंट्री. और आई थिंक वी शुड ऑलवेज लर्न समथिंग फ्रॉम द थिंग्स दैट इज इट इज गुड, द गुड थिंग्स. देखो, बाहर मार्केट में आपको गुड थिंग्स भी है, बैड थिंग्स भी है. इट इज इन यू वेदर यू वांट टू लर्न द गुड थिंग और बैड थिंग. ऑलवेज ट्राई टू गेट द गुड थिंग्स एंड लीव असाइड द बैड थिंग्स. ओके, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाना चाहूंगा, सोशल मीडिया की थोड़ी सी बात करूंगा. तो आप इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम वगैरह या ट्विटर यूज करते हो? जी, इंस्टाग्राम यूज करता हूँ. तो आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स वगैरह वायरल होती है, तो आपको क्या लगता है कि उसका आज के यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? अभी तो जैसे अब मेरे बच्चे भी हैं, तो अभी मैं ये देखता हूँ कि बच्चों के ऊपर तो अफेक्शन है, जो है रील्स को देखने का, उनको ये बोल सकते हैं चस्का टाइप का, जो है ना कि हमें हर टाइम मुझे वो
मन कर रहा है देखूं एक बार इस टाइप का। लेकिन उसमें भी रील्स में अब कुछ गुड थिंग्स भी है, बैड थिंग्स भी है। अगर गुड थिंग्स है, सपोज मोटिवेशनल फैक्टर्स है, कुछ समथिंग दैट इज एजुकेशनल पर्पसेस, तो वो अच्छा है। चलो मान लिया 50 हाफ एन आवर देख लिया किसी ने, या फिर 1 घंटा देख लिया और उसने दिन का मतलब उसको कुछ सीख लिया, तो दैट इज ओके। बट समथिंग दैट इज बैड, दैट इज स्पॉइलिंग समथिंग, मतलब द सोसाइटी, और समथिंग इज स्पॉइलिंग द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, तो दैट टाइप ऑफ थिंग शुड बी, मतलब दे शुड अवॉइड इट। बिकॉज देखो, दिस इज अ ओपन प्लेटफॉर्म, we cannot if government wants to restrict also, they cannot restrict. Somebody wants to hold the things, but still they will find some another way to put it on the these channels or something. So we should it should come from our mind, it should come from our understanding. What is the good thing? I already told you, there are both the things available in the market, good thing also and bad thing also. So we should try, we should teach our children also, we should teach our brothers and sisters, whoever they see. You used to see the things, but the good things you should grasp, and the bad thing you should keep aside. Always. It is a part of life. ओके, तो फिर से वापस आते हैं तो उसी पे, तो लॉजिस्टिक्स की थोड़ी सी बात करते हैं। तो एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स काफी क्रूशियल होता है किसी भी ऑपरेशन के लिए, किसी भी इंडस्ट्री में। तो हाउ डू यू ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक्स और इन्वेंटरी मैनेजमेंट इन एविएशन सेक्टर, जहां पे एक्यूरेसी और टाइमलीनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किसी भी सिनेरियो में सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सपोज देखो, अभी अगर आप एविएशन सेक्टर में ही हम जाते हैं, अगर आपके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर सही से नहीं हुआ, तो आप सर्विसिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट है, सपोज यू कैन नॉट डू द ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस शेड्यूल्स दैट यू हैव प्लान्ड. Suppose it is a 100-hour servicing, or it is a 50-hour servicing, so you require some spares for each servicing. So that mandatory spares, you should be, that supply chain, your logistics system should be able to provide you that system. Abhi nowadays there new concept have come, PBL, that is performance based logistic. Means whatever the requirement, suppose for 100-hour servicing, if your schedule is planned for 100-hour servicing, so for that some critical spares might be required. So that time your logistic will able to provide you in advance that all type of spares. They are aware about it. In 100 hours you will be requiring this type of spare. They will keep on tracking the things. They will keep on updating the things, and they will providing you at the timely this availability of the spares. So this is a very important. Your question is very viable in that scenario. For every field, neither it is either aviation or it is either something. The supply chain management plays a very crucial role. If your supply chain is 100% foolproof, then you will never lose your business. Every business will be dependent on this supply chain. You have seen this, Flipkart, Amazon. This all. What is this? This is only a supply chain management system. Uber, everything. Whatever the social media platform you are finding, which is helping individuals for getting the things done. So they are just following the supply chain management system, and they are having a foolproof system. That's why it is working. Oyo rooms hai, something, Uber hai, everything like this. So these are having a very foolproof supply chain management system. So for logistics system, it is very much important. If you are concerning with the aviation, so it plays a very crucial role, because every time you have to be, for each aircraft, if you are flying aircraft, you must have something, some spares are required, like ATF, fuels are required. So these all come through logistic only. So it is a very important things, and you should have a very good handhold on this logistic system. तो जैसे कि अगर मैं एआई की बात करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की, तो आप अगर मैं एविएशन सेक्टर की बात करूं, तो आप मशीन लर्निंग को या एआई को कहां देखते हो? अभी के टाइम में एआई का काफी रोल आता जा रहा है। अभी जो टाइम सिनेरियो चल रहा है, अभी आप देख रहे हो दुनिया एडवांसमेंट में फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट पे अभी हम बात कर रहे हैं। 4th जनरेशन तक तो चला गया, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे आ रहे हैं। तो अभी आप जैसे अभी जो लड़ाई चल रही है, अभी इजराइल की चल रही है फिलिस्तीन के साथ में, जो भी है इस टाइप के जो वॉर्स हो रहे हैं, उस वॉर्स में एआई एंड मशीन लर्निंग ही यूज हो रही है। तो आगे का जो सिनेरियो आने वाला है, जो फ्यूचरिस्टिक है, दैट इज डिपेंडेंट टोटली ऑन एआई एंड मशीन लर्निंग।
So India is also working on that. They are also advancing the things as per the machine learning and AI. And I think it is a viable also, because it is difficult at this scenario. I will tell you, it is very difficult if we are going with a traditional system of warfare or traditional system of fighting. It is not possible at all. You should have something different. Then only you will able to win the war, and you will able to win the things. देखो, it is very important कि whoever the enemy is there, he should be afraid of you. Something, मतलब that you should show something कि हाँ, this I have that capability. Then only your neighbor countries or your enemy will be, मतलब will try to avoid you. That is the much more concern. It is not required कि हाँ, you will go for fighting or something. You should avoid the things. So I think AI and machine learning will play in future a very important role, very crucial role. ओके तो अब तक की आपकी जो जर्नी रही है, अगर मैं आपको कहूँ कि इफ यू हैव टू समराइज योर जर्नी इन वन वर्ड, तो वो वन वर्ड क्या होगा? I can say, अभी इसका वर्ड तो कुछ मिल नहीं रहा है बट मतलब कि अच्छा एक मतलब अभी हमें लगता है 20 इयर्स जो मैंने अभी स्पेंड किया एयरफोर्स में, फिर लास्ट 2 इयर्स से आई एम सर्विंग इन प्राइवेट कंपनी इन एविएशन कंपनी. सो एवरी टाइम आई फाइंड मतलब आई हैव फाउंड अ नंबर ऑफ चैलेंजेस इन माय लाइफ. Challenging, मतलब we can say challenging atmosphere was there. Every time I find something new to discover, something new to find out, because aviation sector is like this only. If you like, abhi just now I am working for the obsolescence system of Indian Air Force, like the system that we have procured in 1960s, and now that the supply, whatever I have spoken to you, the supply chain management system has already collapsed. Now this Russia war is going on. So whatever most of the things are what we have procured in India are from Russia only. So now they are not able to provide the spares, not able to provide the systems to us. So the now scenario is like that. We are working to find out the new things on that, how to get the things done with our new technology, with our whatever the things are with us. With that, we can able to survive. We have to survive that all equipments. So these all are challenging. So I can say only that this 22 years is a challenging job, and I am keep on learning the things and discovering the new. Every time I am finding the new things to find out. So this journey is keep on going on, and let's see how far I can reach to there. Okay. तो बिफोर रैपिंग द पॉडकास्ट, तो आप जितने भी लिसनर्स हैं उनको कुछ कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहूंगा कि यू शुड बी इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन. यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न द थिंग्स फ्रॉम द वन हु नोज समथिंग. एवरीवन देयर इज if you meet a single person, every person in your life, you will find some qualities there which one should learn from it. So whenever you are meeting a person, anybody, suppose you are meeting a sweeper, you are meeting a policeman, you are meeting a doctor, everyone teaches you something. So try to grasp that and try to get the good things, good qualities from them, and that you always focus on this and you try to use it in throughout your life. And also teach your subordinates, your children's the same thing, so that they could feel that somebody whom I am speaking is an inspiration. So always be an inspiration for everyone.